So you are able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, fine. So inline frame in HTML5, the iframe element creates an inline frame. So students, to get an inline frame, what is an inline frame? I'll tell you. To get an inline frame, you have to take iframe open tag and iframe close tag. Okay. So what is an inline frame now? Inline frame is nothing but it is also called as floating frames. Okay, it floats on our screen, or it is just like a small window inside which we can place whatever contents we want. We can call a file, or we can write our content whatever we wish using different tags like b tag, u tag, i tag, f tag. ऐसे बहुत सारे टैग्स हम लोग यूज करके हमारा जो पेज है वो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं. We can design our page and we can keep inside it. It is also called as floating frame because it looks like a floating frame inside our web page. कहीं पे भी place कर सकते हो. It emerges like a small window inside which we can keep all our contents, or we can write all our contents. So second point is inline frames are often used in online advertising where the contents of the iframe is an advertisement from an external party. HTML allows the incorporation to be seamless, no scroll bars, borders, margins, etc. So students, you might have seen a simple example I'll be giving you. If you go and read in your mobile, okay, if you read news in the Google, if you go to Google, we have current news, we get current news. If we keep on reading that, इन बिटवीन यू गेट अ स्मॉल विंडो. अभी अगर आप लोग वेबसाइट्स जैसे कि Amazon एंड if you see Amazon and Flipkart, Snapdeal, these are all the websites you are normally looking through. तो वो क्या करेगा? That will be if you search, if you scroll the Google's tab and read the news, in between only you'll get the window related to that websites which you often visit like Amazon, Flipkart. उसके ads आते हैं, देखा है किसी ने? बीच बीच में ही ads आते हैं. फिर एक छोटा सा क्रॉस का साइन आपको दिखेगा, वहां पे जाके क्लोज करना है तो वो क्लोज हो भी जाता है. बट इफ वी दो वी स्क्रोल ऑल्सो, वो विंडो भी ऐसे ही, मतलब ऐसे लगता है कि मतलब इट्स सो नाइसली विजिबल, 3D जैसा ही दिखता है. Has anyone seen that? No, no one has seen. Am I audible? Yes, ma'am. हाँ, who said yes? प्रियंका. प्रियंका, तो तुमने नहीं देखा है ऐसा एक विंडो? देखा है. देखा है ना? जब गूगल पे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स, जो भी आप वेबसाइट्स ज्यादातर से देखते हो उसके एडवर्टाइजमेंट आता है. आता है मैम. हाँ, तो अभी जैसे कि फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के ऑफर्स अगर चल रहे हो तो उसका हमको विंडो दिखाई देता है कि फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट दिस ऑफर इज वैलिड करके, वो भी विंडो दिखाई देता है. हाँ मैम. It is what it will be floating also. As you scroll up and down, it will also scroll up and down, right? But when we close it, it will close from that page. बराबर? Yes मैम. हाँ, ऐसे ही यस बोल रहे हो कि सच में देखा है? नहीं, सच में देखा है. हाँ, ओके फाइन. मैम. तो या मैम मुझे नहीं समझा. ओके. Who is this? Akanksha? हाँ मैम. Just now you came? हाँ मैम, नेट इश्यू था. Okay, okay. Inline frames are nothing but floating frames. Okay. On our web pages, they just look like they float on our web page. They can be placed anywhere. Their size can be increased, decreased. Okay, I'll show you its output, means you will understand why it is called as floating frame. Okay. Yes मैम. मैं example बता रही थी and I asked if anyone has seen this. गूगल पे जाके अगर आप मोबाइल पे अगर आप न्यूज पढ़ रहे हो तो बीच बीच में आपको एक एडवर्टाइजमेंट का पेज आ जाता है जिसके पास एक छोटा सा क्लोजिंग टैब रहता है. आप जाके क्लोज करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा, लेकिन जब स्क्रॉल करते हो बाकी का पेज स्क्रॉल होता है.
तो वो वहीं पे अटका रहता है. इफ यू वांट टू क्लोज यू कैन क्लोज, और एल्स इफ यू स्क्रॉल अप एंड डाउन इट विल स्क्रॉल आल्सो अप एंड डाउन समटाइम्स. देखा है? कोई भी एडवर्टाइजमेंट का बीच बीच में आता है, देखा है आपने ऐसा? हाँ मैम देखा है. हाँ, तो गूगल पे अगर नॉर्मली, ये मेरे साथ होता है जब मैं गूगल पे न्यूज रीड करते रहती हूँ, बीच बीच में ही ये जो वेबसाइट्स में यूज करती हूँ, जो शॉपिंग वेबसाइट्स, उसके एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं बीच में ही कि ये दिन से ये दिन आपका ऑफर में चल रहा है, तो ये देखो करके वो वेबसाइट का आता है एडवर्टाइजमेंट. तो दैट इज जस्ट लुकिंग लाइक अ फ्लोटिंग फ्रेम, नो? सो दैट इज ओनली Yes, व्हाट वी आर ma'am. स्टडीइंग अबाउट. ओके. Yes. So it doesn't have any border, margin, or it doesn't have any scroll bar. It just looks like a window showing you the advertisement. So you can scroll it up and down, or you can close it according to your wish. You can do that. Okay. So such type inline frames we are going to learn now. Okay. Understand the attributes first. We will go with the program. You'll understand this completely. Attributes of iframe. So attributes are SRC, that is source, height, width, name, and SRC doc. We are all aware of now SRC क्या होता है, source क्या होता है, height, width क्या होता है, ये सब हम पता है अभी क्या है. So source का value है URL, specifies the address of the document to be embedded in the iframe. So what I told you, we will get a window or a frame. Inside that, what we need to keep, if you want to call a file, that file's URL we have to give in front of source. Understand a little bit idea. If you get about these attributes also, it's okay. एक बार आप प्रोग्राम समझ लो तो ये सब इजी हो जाएगा, खुद से भी लिख सकते हो. ओके. तो एसआरसी क्या है? एसआरसी का वैल्यू है यूआरएल. सोर्स के सामने हम लोग यूआरएल लिखते हैं. किसका यूआरएल लिखते हैं? किसका पाथ लिखते हैं? जो वो आई फ्रेम है, इनलाइन फ्रेम है, फ्लोटिंग फ्रेम है, उसके अंदर क्या डिस्प्ले करना है आपको. अगर एक फाइल कॉल करनी है तो उसका यूआरएल, उसका पाथ हम लोग देते हैं सोर्स के सामने. क्यों देते हैं? क्योंकि जब सोर्स के सामने पाथ हो तो वही प्रोग्राम का आउटपुट आपको वो विंडो में मिल जाएगा. ओके. सो हाइट, the iframes, the inline frames, height and width you can adjust with the help of pixels. Okay. And name, you can specify the name of an iframe, that what frame you're making now, you can name it also. Then SRC doc. Now instead of calling a file and placing its output inside the, instead of calling an output and placing it inside the window, if you want to write your own sentences inside the window also, that also can be done with the help of attribute SRC doc. Means a frame, what I told you, a frame or a window, that is your inline frame, which you can keep on your web page. That is an inline frame, a frame, floating frame. Okay. So inside that a file can be called, its output will be displayed on that inline frame. Or else if you want to write your own sentences, that also can be done with the help of attribute SRC doc. Okay. Any doubts here or full of doubts? No ma'am. Clear? हाँ मैम, आप प्रोग्राम बता दो. Okay. Yes. Now, before showing the program, I'll show you the output. Now, see students, this is a inline frame or this is a floating frame. Okay. Can you see this? See, this is the heading, HTML iframes. HTML iframes. This is the heading. This is the example of iframes. This is also a small subheading. But this, see, this is the frame. This is the floating frame. Okay. It is floating on your web page. So it is called as floating frame or inline frame. So inside this one program's output has been displayed. Why? Why means this program's path I have written this program's path in front of source attribute. SRC के सामने मैंने URL क्या लिखा? इस प्रोग्राम का path, इस प्रोग्राम का URL वो लिखा.
तो इसीलिए दिस प्रोग्राम हैज बीन कॉल्ड इनसाइड दिस इनलाइन फ्रेम. सो इट इज अ, तो ऐसा ही आपको गूगल में जब आप स्क्रॉल करते रहते हो ऐसे ही बॉक्स में आपको क्या आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट आती है और यहाँ पे एक छोटा सा क्लोजिंग टैब रहता है, बराबर. वो एडवर्टाइजमेंट बीच बीच में ही आता रहता है, आप पढ़ते हो एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से क्लोज कर देते हो, फिर स्क्रॉल करते हो, फिर वो गूगल की पेज भी, गूगल का पेज आपको दिखाई देता है, हाँ या ना? हाँ मैम. Yes. Okay. Then one more thing is, this is one example where I am calling a program's output inside my inline frame. Second one is, see here, I have written inside my inline frame only hello students. Only hello students I have written, means if I want to write simple sentences, my own sentences inside the inline frame, that also can be done by me. This is a simple inline sentence which was framed by me. So I didn't call any file and place its output inside this window. I only just wrote whatever sentence I wanted to write. So this also can be done, that also can be done. Any program's output can be called, and anything whatever I want, that also can be written inside the iframe. Now we will see the output for both the programs. Just give me a second. Yeah. Now students, just see here. See here. Now, very simple program. HTML open tag, HTML close tag, body open tag, body close tag. Again, I told you that head section, body title section and all I have skipped. If you want, no, in exam you have to write only. No want and all, you have to write only to gain marks. If you don't want marks, don't write. Okay? Okay. Yes ma'am. Huh. So Akanksha, want marks or no? Ma'am, yes. Then write. Okay? हाँ हाँ. मैम, बट आपने देखो ना मैम, हेड नहीं लिखा, टाइटल नहीं लिखा, फिर भी लाइक आउटपुट आ रहा है. हमने अगर एक भी मतलब थोड़ा भी अगर मिस्टेक किया ना तो आउटपुट आता ही नहीं है. हाँ, तो तुम मेन जगह पे मिस्टेक कर रहे हो. अभी समझो, मैंने ये SRC निकाल दिया तो मेरे को आउटपुट में मिस्टेक आएगा ही. हाँ ठीक है. जो मैम, मैंने बट टाइप एक किया कोलन के लिए है, भी जाता है. जो मैंने टाइप किया है, डिट्टो डिट्टो टाइप करके देखो ना, आएगा ही, आना ही हाँ. चाहिए, क्योंकि मेरे को आ रहा है तो ओ- तुमको भी आना चाहिए. और सुनो, अभी हेड में, टाइटल में आप मत डालो, जैसे कि मैंने नहीं डाला है तो भी आउटपुट आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप मेन जगह पे मिस्टेक करोगे, अभी देखो पी टैग में मिस्टेक करोगे तो भी चलता है. ओके, तो वो क्या देगा, हाँ. आपको सिंपल सेंटेंस प्रिंट करके देगा, पी टैग उड़ा देगा. मतलब पी टैग पैराग्राफ स्टाइल में वो नहीं आएगा, लेकिन सिंपल प्रिंट होगा. ठीक है. लेकिन आपने आई फ्रेम SRC वो वाली जो लाइन है, मेन वाली लाइन, वहां पे गड़बड़ किया तो ऑब्वियसली आपको आउटपुट नहीं दिखाई देगा. समझा? तो मेन जगह हाँ पे मैम, मिस्टेक नहीं चाहिए. Yes. Okay, so this you have to be careful. So, and what mistake where you are not getting the output, वो लाइन चेक करो, और उसके ऊपर और नीचे वाली भी लाइन चेक करो. आपने डबल कोट नहीं दिया होगा, या फिर बच्चे लोग क्या करते हैं पता है, ये वाला जो डबल कोट है ना, दिस इज डबल कोट. वो लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे सिंगल कोट 2 बार देते हैं, वहां पे वो भी मिस्टेक है. समझा? तभी भी आपको एरर मिलेगा, और आप लोग बोलोगे मेरा तो प्रोग्राम राइट है, क्यों एरर मिल रहा है? ये डबल कोट है, ये सिंगल कोट 2 बार देना नहीं है यहाँ पे. ओके. और नेस्टेड डॉट HTML, ये जो प्रोग्राम आप कॉल कर रहे हो, इसका नाम और जो आपने सेव किया है वो नाम सेम होना चाहिए. अगर मैंने यहाँ पे nested1.html डाला और मैंने सेव किया है nested.html के नाम से, तो वो कॉल कैसे करेगा? समझा? हाँ मैम. हाँ, तो ये बेसिक ये जो है स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, बेसिक थिंग्स. एवरी ईयर आई सी स्टूडेंट्स डू दिस थिंग्स.
Okay, now your roll number Akanksha, your roll number is 2, right? Yes. I want to call you by your roll number. Okay, now if I say in the class, in my class, if I say roll number 2, please tell me the answer, you will tell me the answer. Okay, but by mistake, if it is my mistake, if I say instead of roll number 2, roll number 22, then why will you answer me? You will think this is not my roll number, why should I answer? यहाँ पे भी वही है, कॉल करने के टाइम आप कॉल बराबर नाम से करोगे तो ही वो आउटपुट देगा, नाम बराबर से कॉल नहीं करोगे तो वो आंसर क्यों देगा? और मैंने क्या बोला है, जो आप प्रोग्राम कॉल करने के टाइम ना वही फोल्डर में आपके प्रोग्राम होने चाहिए जो आप कॉल कर रहे हो, जो है प्रोग्राम और जो कॉल करोगे। यहाँ पे भी 2 प्रोग्राम्स कनेक्टेड है, ये जो है आईफ्रेम वाला प्रोग्राम और ये जो नेस्टेड वाला nested.html ये वाला प्रोग्राम जो आप कॉल कर रहे हो, ये दोनों प्रोग्राम इंटरकनेक्टेड है ना, तो ये दोनों प्रोग्राम एक ही फोल्डर में होने चाहिए, समझा? तो these are the basic things what you have to keep in mind. And some people ना लास्ट में आके HTML का ये जो स्लैश है ना वो उल्टा डाल देते हैं, तभी भी प्रोग्राम में गड़बड़ हो जाती है। तो हमारे मैडम प्रोग्राम तो करेक्ट है फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा है, नहीं, कहीं ना कहीं मेन थिंग आपने गलती की है। ओके, सो ईच एंड एवरी लाइन जस्ट गो एंड चेक, अदरवाइज वन डॉट नहीं दिया होगा, ये नेस्टेड डॉट HTML, डॉट ही तो मेन है, डॉट नहीं दिया है, कॉमा दिया है तो भी वो नहीं आता है आंसर। ओके, so these are the basic things what students go wrong with, so keep this in mind. Okay, now Okay, ma'am. Okay, so HTML open tag, HTML close tag, body open tag, body close tag, H2 open tag, H2 close tag. So H2 open and close tag, inside that what I've written, HTML iframes. So this is the heading, second highest and boldest, this is being printed on my output screen. Now P open and close tag, this is paragraph tag. Inside paragraph tag what line I've written, this is the example of iframes, so it is just displayed on the output screen in the paragraph style. This is the example of iframe, that's it. Now main thing is this line, ये line perfect होनी चाहिए, आपको output मिल जाता है. Now students see here, iframe open tag and iframe close tag. Yes, tell me now, iframe open and close tag दो है इसके पास, ओपन टैग भी है क्लोज टैग भी है, तो इसको क्या मैं स्टैंड अलोन टैग बोल सकती हूँ? एनीवन? नहीं. या फिर आई कैन, इफ आई कैन आई से पेयर्ड टैग? Paired tag. या इट इज एन Ma'am, एमसीक्यू paired tag. पेयर्ड टैग या Shreyash? Ma'am. Shreyash is there in the lecture, right? Shreyash. Fast, fast. Shreyash. People don't unmute themselves. Please say Khushi. Just now she entered. Khushi. They don't unmute themselves. It seems like only I'm calling 2 to 3 children I'm talking with. Amala. Yes, ma'am. Yeah. Yes, student, tell me that can I now this iframe open and iframe close tag hai, barabar? Yes, ma'am. So can I call it a standalone tag? No, ma'am. No. Okay. Can I call it a paired tag? Yes, ma'am. Can I call it a container tag? Yes, ma'am. Okay. So why can't I call it a standalone tag? फिर वो ओपन भी होता है और क्लोज भी करते हैं. Okay. Can I call it an empty tag? No, ma'am. Why? एम्प्टी टैग में एक ही टैग रहता है ना, मतलब उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं रहती. हाँ, very good. Yes, good girl. Okay, fine. Thank God anyone unmuted other than 2 to 3 students. Yeah. So iframe open tag and iframe close tag, both tags we have. Iframe src is equal to URL. I said src attribute के लिए the value should be URL. Now I am giving the URL or path of the file which I want to call and
place it inside my iframe. Okay, so nested.html, this program I've already made. ये program आपके पास होना चाहिए. This program I've already made. Okay, last time हम लोगों ने nested वो सब सीखने के टाइम ये बताया था. इसका आउटपुट है मेरे पास, इसका कोडिंग भी है. Okay, so I want that nested lists output inside my inline frame. So what I'll do is इसका URL जो है, URL मतलब जिस नाम से मैंने इसको सेव किया है, that URL or that path I'll be writing inside the double quotes as a value of src attribute. Okay, means that file will be called, that program's output will be placed inside my iframe. Height is equal to 200, width is equal to 300, means height and width of this iframe can be adjusted by me according to my wish. How much bigger in size I want or smaller in size I want, I can do it with the attributes height and width, and these are in pixels. Okay, iframe close. So this is my output. Very simple and very easy. And students, this is important for exam related to iframe. They'll be asking one or the other question. Okay, so be clear with this. Now next is this one. Its output also we will be seeing. Yeah. 1 second. Yeah. So here one basic difference is that HTML open and close tag, body open and close tag, H2 open and close tag gives us the heading in second highest and boldest HTML iframes. Okay. P, this is the example of iframes. This is the example of iframes inside P open and close tag. So in paragraph style, it has shown us iframe src is equal to. Now students, is instead of src, iframe open and iframe close tag, we have iframe open tag ke inside iframe open tag, instead of writing src, I have written what? Src doc. Why src doc? Means instead of calling a file, whatever I want to write my own lines, I can write with the help of src doc. Okay, so src doc, this attribute helps me to write any sentences which I want. Okay, and I can style it also. मेरे को क्या लिखना था? मुझे hello students लिखना था वो iframe के अंदर, तो मैंने लिखा. मुझे वो hello students paragraph style में चाहिए था, तो मुझे कैसे लिखना है? P open and close tag लिखना है उसके आजू बाजू में, and this should be as a value double quotes के inside होना चाहिए, क्योंकि this I am giving as a value for the attribute src doc. src doc is an attribute of iframe tag which has the value this one. So as a value I should give it inside the double quote. अगर मुझे वो bold करना है तो यहाँ पे again bold open tag and bold close tag दे दो. उसको italic भी करना है तो inside इसके italic open and italic close tag दे दो. उसको h1 में display करना है तो यहाँ पे h1 open tag h1 close tag में दे दो, और वो उसको double quotes होना चाहिए क्योंकि this is the value of the attribute src doc. Okay, which is the attribute of iframe. Now students, again I'm framing, again I'm giving the height and width of my window, that is 200 and 300 height and width. Naming, I'm naming my here one more attribute I've used of iframe, that is name attribute. I'm frame को इस frame को मैं नाम दे रही हूँ. F1 I have given name, any name you can give which should be relating to your program. F1 दो, ABC दो, PQR दो, XYZ दो, anything you give, that's okay. Then iframe close. Okay, so I think this is very clear. Anyone, any doubts here? No doubts? No doubts only? No, ma'am. Yeah. Yeah, Akanksha, one more name you can tell me in this class whose name I didn't take only yet. Come on fast, in 2 minutes I want. Ma'am, Rushikesh. Rushikesh. Okay, Rushikesh, unmute yourself. Fast. Mansi Patil. Mansi Patel and Rushikesh, fast. The one people Yes, who ma'am. are not unmuting themselves, with their names will be gone to sir by tomorrow.
Yes, ma'am. Who is this? Ma'am, Mansi. Yeah, Mansi. If I want to write inside my iframe, simple lines, okay? According to my wish, I want to design those lines and I'll write those lines inside my iframe. What attribute I have to use of iframe? SRC doc. And if I want to call a file? SRC. Okay, fine. And how to call a file? We have to put its URL in the value of SRC. Okay, good. Okay, fine. Okay. If last lectures questions I'm asking you now, in image mapping, if I want the coordinates of rectangle, then what should I do? Miss, paint. We have to open paint, draw a rectangle, Hmm. and then we have to means note the coordinates of two opposite points of Okay. the So rectangle. total, how many coordinates I should have? 4. 4. Okay, good. Okay, fine. Thank you, Mansi. Next to Rushikesh. Where is he? The people who are not answering me today, their names will be gone to sir. Yeah, Rushikesh. Akanksha, note the name Rushikesh, okay? मैम हमारे कॉलेज का है ऋषिकेश, उसका सरनेम क्या है? ऋषिकेश खैरनर महेश हाँ, खैरनर ऋषिकेश. Oh, okay, okay. Very popular boy. Okay, fine. Okay, okay. I'll also note down his name. Next name fast. नेक्स्ट तो बाकी सबका तो बुलाया आपने Any no name I have now? Any name of your wish you give now. खुन्नस निकालना है तो अभी निकालो जल्दी. वेदांत सुरलकर सुरलकर वेदांत. Yes, miss. Yeah. पोस्टर एट्रीब्यूट क्या है? Yes, this is MCQ paper. You can say. आज MCQ पेपर चल रहा है आपका. Fast. Poster attribute of URL. video tag. Sorry, miss. वीडियो सिखाने के टाइम पोस्टर एट्रीब्यूट सिखाया था, याद है? हाँ हाँ. हाँ बोलो. वो if it specifies an image while the video is downloading. when मतलब वो जब वीडियो डाउनलोड होने से पहले मतलब सामने थोड़ा से ब्लर करके कुछ तो भी आता है एटलीस्ट. तो वो ओके मतलब ओके. हम स्पेसिफाई कर बेसिक सकते आइडिया हैं आपको कि पता ऐसा है. थोड़ा ओके दिखाना ओके है. फाइन फाइन फाइन. ओके फाइन. वन मोर क्वेश्चन टू यू इटसेल्फ. loop is equal to, if I give in audio tag loop is equal to 5 means what? 5 times that video will be repeated. That Audio same will be video. repeated. Okay, then it will stop. Yes. Yes. Okay, fine. Next repeat name. value. Okay, fine. Now your name is what? Suralkar Vedant, na? हाँ. You take one name now to whom I should ask question. Fast boy. आकांक्षा. आकांक्षा वो बहुत बार देती है आंसर, नहीं चाहिए वो आज मेरे को. ये शिवराज. मैम युवराज. शिवराज करवाड़े शिवराज. Okay, शिवराज. Fast boys. Girls are very fast, huh? You people are like tortoise. Slow. Yeah. Shivraj. First. No, okay. Note his name. Khairnar, Rushikesh and Shivraj. 2 names I have now. Who are not answering me. Next name. Priyanka degi mere ko next name. Priyanka, fast. Yes, ma'am. Tell me a name. 1 minute, ma'am. In one chapter. Alina. What all I have taught? Yeah. Alina Thomas. Yes, क्योंकि बहुत कम लोग हैं मैम.
Okay, fine. Alina, ma'am. yeah, tell me universal selector what it is. Universal selector. Yeah. She's turning the pages, no? नहीं पता. Nahi pata. Didn't expect this from you. Universal selector is the one which is giving the styling to all the lines, dear. Okay, okay. Whatever it is, it doesn't mind, it doesn't care, it is styling the whole page. Barabar Okay, na? ma'am. हाँ. Very bad girl, huh? I didn't expect this from you. I thought you will answer me anything, whatever I ask. Meta tag के बारे में कुछ बोलो. मिस मेटा टैग मतलब वो सर्वर साइड्स इसमें यूज करते हैं. मतलब हम अगर डेटा मींस गूगल से कुछ पूछेगा तो उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए मेटा टैग का यूज करते हैं. हाँ, meta tag is giving the information. Yes. Right. Okay, fine. Okay, this was this thing. I have two names now. Which are those names? Akanksha, ऋषिकेश और ये शिवराज. शिवराज. मैम श्रेयस एक और है. Shreyash. मैम जैसे ही नाम लिया उसने ऑडियो कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया. हाँ, वो चालू लड़का है, मेरे को पता है ना, अपने ही कॉलेज का है ना वो. हाँ मैम पूछो अभी. या I know him. फिर से कनेक्ट हो गया. Shreyash. मैम या क्वेश्चन पूछो. Shreyash. He's mad boy. He's simply wasting our time. Yeah, we'll move on to the next thing. We have Shreya, Shivraj, and Khairna Rushikesh. I think I don't know Shivraj, but this Khairna Rushikesh and Shreyash, they sail in the same boat. I know these people, right? Yes ma'am. Yeah, very good. Okay, so we'll see. We'll do something. Okay, fine. Web hosting. Now we will move on to the last small topic from this chapter. That is web hosting. Hope so everything other than this you have understood very well. And go through this chapter, very important chapter. And you can gain marks very easily in IT. So I don't want you to lose marks from this chapter at least. It's very easy also. Only you have to read it. Okay. And in 2-3 days only complete this chapter reading so that the things will be revised and you will remember the things. Yes, next is web hosting. Now we know how to create a website, but just creating of a website is not sufficient. One has to make the website available on the internet. These web pages are to be stored in the web servers that are connected to the internet to be made available to others. So students, what is web hosting? Okay, before learning web hosting, we will know few basic things. See students, now the whole chapter, why I revised, because why I asked you questions, because now we all know how to make web pages. Okay, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन जो भी आपके सिलेबस में था उतना तो हमको पता है. Okay, so how to make a web page, design a web page, we know. Collection of a web page, make a website. So in short, we know how to create a website now. Okay, a small simple website also can be created by you people, which can have simple web pages. You can design them. But students, now if I'll take my example, if I create a website and keep it with me, is it useful? If I create a website, it is doing, website क्यों बनाते हैं हम लोग? गूगल एक वेबसाइट है, क्या करता है? सर्च करता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे देता है हमको, उसका एक अलग काम है. अमेज़न एक वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है, वो सब शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, वो उनका एक काम है ना. वो गूगल के जैसे हमको आंसर्स नहीं देते. दे आर giving us different answers, just like a type of clothes. If you want to wear, you can ask them, they'll give you the answer. If you want to shop something, it will give you the answer. They are the shopping sites. And Groover, yes, nowadays Groover is a trending site.
wherein from this site you can get groceries. अभी मैंने 3 अलग अलग वेबसाइट के नाम क्यों दिए? ग्रूफर आपका ग्रोसरीज डिलीवर करता है, and Flipkart, Amazon, Snapdeal and all, they deliver you clothes and decorative items, birthday party items, anything like that. And Google is a website which gives you answer to each and everything, whatever you ask, whichever web page you ask, it will give you the answer. These different websites do different things for us. If I create a website which does a thing for us, which gives which has some meaning, which does some work for me, but लेकिन अगर मैं मेरे तक ही रखूं, बना के चुपचाप बैठूं तो चलेगा? नहीं मैम, नहीं ना, तो क्या करना है? इंटरनेट पे उसको अवेलेबल करना है ना, हाँ ताकि वो उसका सर्विस, so that its a service should be reached to different people, right? अभी Amazon ने अपना वेबसाइट बनाया और चुपचाप बैठ गया वहां पे, तो चलेगा? नहीं. When we know it through the internet, when we are getting its service, now I can say that Amazon is very good. As I am using Groofer to get groceries in this lockdown period, I didn't go somewhere else and took this thing, groceries items. I got all the grocery items at my doorstep from the Groofer's website. But Groofer ने वो बनाया होता, चुपचाप बैठ गए होता तो होता था? नहीं. उनको क्या था? मार्केट में कमाना था, right? They wanted to have their own status in the market, so and to earn money. Okay, they had their own ideas and values, so they came into market. How they came into market? Through the internet. So if I make a website, it has its own service and it should be available on the internet to all, to everyone. We have to see on the internet, we have to use that website, then only it is worth to make the website. If we only make the website and sit on one place, that's not sufficient. So students, one has to make the website and make that website available on the internet, then only the value of the website increases. Then only it's worth to make that website, right? So students, Yes, how ma'am. to make it available on the internet? How to make them available on the internet? This we are going to learn. How to make, if now I'm making the website, I've made it. I should make it available on the internet, then only its value will increase. So how to do that? So this web pages, this website what I've made, which has many of the web pages, that should have some storage space in the website. My website which I have created should have some storage space in the web server. When it will get some space on the web server, this web servers they'll be directly connected to the internet. Means my website which has been stored on the web server, indirectly my website also is directly connected to the internet. Now my website is available to all. When it is available to all, people go through it. If they find it interesting, they'll use my website, they'll use my service and I'll gain money. Okay, तो ये जो Google है, ये जो Amazon है, ये जो Groofer है, उन्होंने अपनी website बनाई. They have made their website. After doing that, their website, after making their website, what they did, they got some storage space on the web server. उन्होंने क्या किया? वैसे ही नहीं बैठे वो लोग. They took some storage space on the web server. Once they are stored on the web server, the web servers are directly connected to the internet. Means these websites also were directly connected to the internet, and then people were able to see these people were able to see these websites. Then they started using it, as I started using Groofer and other shopping sites also. Yeah, I use. You people also, I think you people use. So we started using it. We liked the services. We started using more and more. When we started using more and more, we did shopping more and more. Its value increased. वो website का value increase हो गया. मैं मेरी friend को भी बोलूंगी, अरे ये site बहुत अच्छा है, आप यहाँ से shopping करो. तो मेरी friend भी करेगी, उसकी friend करेगी, उसकी friend करेगी.
तो ऐसे कर करके उसका वेबसाइट का वैल्यू इंक्रीज होगा, और जब वो वैल्यू इंक्रीज होगा तो वो वेबसाइट भी पॉपुलर होगा और उसका अमाउंट मतलब उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, राइट? एज मेनी पीपल, जितने ज्यादा लोग उसको यूज करेंगे उतना ज्यादा वो लोग प्रॉफिट कमाएंगे मार्केट में. ओके, so main funda is what? After creating a website you have to gain a storage space on the web server. Why? Because these web servers are directly connected to the internet, so that your website also will be directly connected to the internet and it will be available to all. Once it is available to all, everyone will start using it, and then the market value of your website will be increased. Okay, so next. मैम Yeah, मैम आपने वो कौन सा वेबसाइट का नाम बोला था जिसमें ग्रोसरी मिलता है? Groofer. ओके मैम. Okay, use it, it is very nice. हाँ ओके मैम. Okay. Okay, fine. मैम And बट for, फ्लिपकार्ट ज्यादा अच्छा रहता है ना? हाँ, फ्लिपकार्ट से मेरे को और भी कुछ और ज्यादा भी अच्छा लगता है, वो बाद में बताती हूँ मैं. ओके, फ्लिपकार्ट इज गुड फॉर दिस थिंग, अपना फोन्स एंड ऑल. 1 रुपया का 1 किलो शुगर. या यू हैव ऑफ हेलो मैडम, किधर गई आकांक्षा? हेलो मैम नेट चला गया मैम, वाईफाई